शीतला शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. A very good morning to all of you. Respected Principal in Charge, Floret Ma'am, faculties, staff and families, and all my dear friends. On behalf of NERIE, we extend our warm welcome to all of you present here on this grand event, that is celebration of 75th Independence Day of India. My name is Asim Mazumdar. And my name is Jeffrey Ahmed. And we are your host for the program. This year, India is crossing a milestone on completing 75 years of independence. The government of India decided to celebrate the 75 years of independence with great excitement and named the celebration as Azadi Ka Amrit Mahotsav. So let's celebrate the 75 years of freedom. Let's celebrate the glorious history of people, culture and achievement. आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह त्यौहार हम सब के लिए समर्पित है। आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मिलकर मनाएं, जन जन की भागीदारी से भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएं। We'd like to request today's chief guest and principal in charge, Madam, respected Floret Ma'am, to grace the stage with her precious presence and address the gathering. What a joy and delight to be here amidst each one of you. Yes, the greeting was there when the flag was hoisted, but again, I would like to wish and greet each one of you a very happy Independence Day. We are so happy to see in this gathering, like how I mentioned earlier, that it is not only the faculty, the students and the staff, but we are also happy to see the family members who are here today in the auditorium. We welcome each one of you. We are happy to see the children, the small ones, the bigger ones, you know. This is what we want, that you should always be part of the celebration. You should always be part of anything that we do in the Institute. Now, with these few words, I just want to, to pinpoint some important things regarding the 75th year of our independence. Now, as you know, the Azad Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate the 75 years of independence and also the glorious history of the people, the culture, and its achievements. The official journey of the Azad Ka Amrit Mahotsav, it was commemorated on 12 March 2021. And why was it commemorated on 12 March 2021? In order to be able to start the 75-week countdown to the 75th anniversary of independence. And this celebration, the Mahotsav, it will end only on the 15th of August 2023. When we look at this
very important initiative of the government, we find that there are 5 themes related to it. And these themes, they relate with freedom, they relate with ideas at 75, research at 75, action at 75, and achievements at 75. Let me tell you that last month was a very busy month. And why was it a busy month? Because nearly every day we were getting directions, we were also getting instructions as how to celebrate the 75th year of independence. And this is the reason why there were a series of programs, okay, which officially started from the 13th and which will end today. We started with the Rangoli competition. After that, we had the craft competition. There was also, the other celebrations that they had, like the Prabhat Puri, the candlelight march, okay? We had the flag hoisting, and today we have the cultural program. And as I look at all these activities which were conducted in the Institute to commemorate the 75th year of independence, first of all, I would like to thank Dr. Anand Valmiki. Please give a very, a louder clap, I believe he deserves, for his dynamic leadership, for his enthusiasm. And we have this WhatsApp group where he is active not only during the daytime in the group, but it was 24 hours. And along with him, I would also like to thank Madam S. Palit. I would like to thank Sir Pradhan, who've taken a very, very active role. And then we also have Madam Tulika Dey. We also have Madam Amandeep, Madam Seema R, who have been actively involved in all these programs. And last but not the least, it is our students, our CRs, okay, who have worked tirelessly. They all look very, very tired today with all the hard work that they have put in, but in spite the fatigue that we know that is there in each one of them, yet we see a smile which comes out, which glows out from each one of them. So therefore, I thank each one of you. And yes, I also thank the administrative staff who have always been there, Sir Ram, Sir Ajay, Sir Ajay, Sir Sanjoy, and yes, I have forgotten also the most important person who helped me, who directed me with the flag hoisting, and it is Sir, please can you turn this side? Yes, thank you so much. Ram Singh, okay? Now, thank you, sir. Now, students, okay? Everywhere, wherever you go, the room is fully decorated. It is fully decorated with the 3 colors, okay? And what is the reason? The reason is because along with this, the Azadi Amrit Mahotsav, our Prime Minister wanted also the Har Ghar Tiranga, which means every house a flag. And let me tell you that in Shillong, be it any locality, we see that every household has a flag. And as I was coming down to the Institute today, the entire street, it is being fully decorated, and also our institute here, fully decorated with the Indian flag. Why? What is the reason? The reason is, I believe, what the Prime Minister wants is that it is not that we just hoist the flag and we forget it, or we just decorate it, but there goes a deeper meaning into it, the Har Ghar Tirangana. And what I want to tell you,
at this time is just to remind you the significance of these three colors. Okay? We all know that our Indian flag, and everywhere it is being decorated with these three colors. So therefore, let the saffron color, okay, which reminds us of the strength of our country, always will also remind us of the sacrifices which our ancestors, okay, they did for our future, for us to be able to celebrate this day. It also talks, the saffron color, it also talks about the courageous history and the sacrifices of our freedom fighters. The white color in the middle band of the flag, it symbolizes the path for truth. It symbolizes honesty. It symbolizes peace. Okay? And it also stands for cleanliness and knowledge. So therefore, my fellow countrymen, my citizens, my colleagues, my students, my children, all of us present here, let that these values which are there for the white color of the flag, it will be imbibed, it will be instilled in our lives. Truth is what is so much required, okay? Honesty is also what is so much required. Peace, cleanliness, especially of our thoughts and actions, and the quest for knowledge. Let these values be instilled in each one of us, and let us march into the 76th year of our independence, where more of these values are being seen in our behavior. The chakra, okay, as we know that it dates back to the Mauryan Empire of the 3rd century BC. It stands for what? It always stands for progress. For progress. So therefore, let us go back today, and we will have a fresh look at the work that we put in, okay? As students, as teachers, any work that we put in, let us see that there is progress. Because the chakra, it reminds us of the progress, that we should not be stagnant, we should not be complacent with what we are, with what we have, but then we will continue to see that changes take place, progress take place, and let us wait for no one, but each one of us, we should take this as a responsibility and move out into the 76th year of our independence with this determination, with this motivation. And the green color, okay, it stands for what? It talks about what? It talks about our country. It talks about fertility. It talks about how much we are dependent on Mother Earth. So therefore, let this also be reminded on this day that we need to protect our Mother Earth. And only then, when we are able to really understand the significance, and not only understand the significance, but apply the significance of these three colors to our lives, then only we can say that we are proud Indians. Okay? Now, I know that it is the cultural program which is waiting for each one of us, so therefore I would like to stop here. But before I stop, let us all stand and repeat after me the national pledge. Please repeat after me. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive
to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you. Kublai Shibun. Jai Hind. Kublai, respected ma'am, for your inspiring words and for reminding us the pledge. The British Crown looted $45 trillion. I repeat, $45 trillion from India, ranging from raw materials to the Kohinoor diamond. They took it all. On the eve of independence, India's per capita income was rupees 230, or about $2.8. 75 years later, on this day, by dint of rapid industrialization, LPG reforms, and by the three revolutions, green, white, and blue, our per capita income has increased to about $2,000. The share of our gross domestic product in the world's economy is 3.28%. This is India at 75. Proceeding further, now we have a group song by the B.Ed third semester students.
उजरे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से, जागो। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे
वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हमें होशियारी है थोड़ी है नादानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद, वंदे मातरम। Now, coming on stage is Bandana Saikia and Zarina Chakma from BA 3rd semester with a patriotic song in their melodious and catchy voice. सदके में जावा मेरे दिल जानिया, मैं शीशे झुकावा मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम हो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना।
जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदगी, सर पर हाथ है रखना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हमें झुके बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हमें झुके बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Thank you. आजा आजा जिंद शामी जाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शबीना, जय हो गाने दे, जय हो गाने दे, जय हो। जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Ahora conmigo tú baila para hoy, pues कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। Honorable Principal Ma'am, Chief Guest, learned teachers, DCGC trainees, and my loving BEd students and all. First of all, I would like to wish happy independence to all of you. Today, I have got golden opportunity and a special privilege to perform a patriotic song on this stage. One thing, please excuse me if I commit any sort of mistake during the performance, because this patriotic song that I am going to perform was sung by my senior students at JNV, because I have been also a student of JNV, and there I knew. But today, my senior students used to perform in Qawwali form, but I am just going to perform in simple form. So, if commits any mistakes, you excuse me, because it is my maiden performance. ये वतन है गौतम नानक का, इसे तूफानों ने पाला है। यहाँ हर बच्चा है भगत सिंह, लक्ष्मीबाई हर बाला है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है।
मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। इस देश जैसे गंगा यमुना कहीं न होगी, वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी। इस देश जैसे गंगा यमुना कहीं न होगी, वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। ये राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, पैदा यही हुई थी गांधी की नेक हस्ती। ये राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, पैदा यही हुई थी गांधी की नेक हस्ती। किसी और देश में तो ऐसा चलन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। इस सरजमी पे आए गुणवान कैसे कैसे, कभी कालिदास जैसे कभी तानसेन जैसे। अरे इस सरजमी पे आए गुणवान कैसे कैसे, कभी कालिदास जैसे कभी तानसेन जैसे। मुझे नाज है वतन पे, अरे मुझे नाज है वतन पे झूठी लगन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। प्लीज स्पीक एवरीबॉडी विद मी, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। Thank you for your support and cooperation. Thank you. वंदे, जय हिंद, जय भारत। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे
तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के
गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। ओ, 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 आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। जय हो, शुक्र हो, जय हो, गाने दे, जय हो, गाने दे, जय हो, मेलोडी। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। चक दे यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आजमाना, यारबाज हम जानसाज हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते दिल के तार से।
नमस्कार, सभाय नमः। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब ये है, your motherland is always better than the so-called heaven that we would want to go at some point of time. So, जीना यहाँ, मरना यहाँ और पैदा होना यहाँ है. And I, Dr. Anand Valmiki, as the coordinator of this Independance honeydew of 75 years of India, which is called as Azadi ka Amrit Mahotsav, would like to propose my humble vote of thanks, which was celebrated by entire country, and NERIE, according to me, stood the best because of the following reasons. We also made Har Ghar Tiranga campaign a grand success with massive participation by our dear students as well as our faculty members. First and foremost, I would like to thank Professor D.K. Saklani, Honorable Director of NCERT Headquarters, New Delhi, who has been constantly motivating us and alerting us to make this program a massive one and make it one of the biggest events of NERIE that NERIE had ever seen before. My second vote of thanks would go to Secretary of NCERT, Professor Mandal, who is the central coordinator from NCERT, who is in liaison with Ministry of Education and Ministry of Culture, from whom we keep getting what we call the feedback, the information, the suggestions, and improvements from time to time as what to be performed in the institution. At the same time, I would like to sincerely thank Professor Srivastava, who is the Joint Director, and also Professor Amarendra Behra, who is also a Joint Director of CIET, for constantly emailing us to pursue the programs one after the other. And now coming to our own magical, divine, angelic, dashing, and dynamic principal in charge, as you say, the name goes, Professor F.G. Dakhar, Floret G. Dakhar, has been constantly motivating and always been calling me from her office to my office, so that, and she also used to visit my office at least half a dozen times every day. I thank Professor F.G. Dakhar for her encouragement, energy, and the kind of enthusiasm that she has provided amongst all the staff, faculty, and also the students. Also, now I would like to thank Professor Nityananda Pradhan, who has been a guide with a lot of experience, who has been guiding this particular program throughout, because he was former principal of RIE Bhopal. At the same time, I would like to thank Madam Palit, who has been constantly an inspiration and a kind of motivator, who kept me active day in and day out. And now coming to NERIE, I would like to take opportunity to express my sincere thanks to all the committee members, Chairperson Professor F.G. Dakhar, Madam Satrupa Palit, AO Ma'am, Ms. Archana, Section Officers, Mr. MP Ram, and Mr. Ajay Das, Dr. Seema R., who is the Cultural Coordinator, and Dr. Tulika Day, who is in charge of the Cultural Coordination Committee, and also Mr. R.A. Singh for organizing a very refreshing Prabhat Ferry. I would also like to thank in between the lighting that NERIE had never seen, which was
through the committee, we was able to fetch it, and I would like to thank electrician Albert, who made this possible within a small span of time because of the support we got from Mr. Deepak Day, who is a store officer here. I would also like to thank the decoration committee, especially the students who worked for the entire day. Name goes without saying, and most of you, I was able to see for 5 hours sitting here, you have been enjoying, doing by enjoying and learning by enjoying, and you have exhibited your creativity in spite of lot of rehearsals, in spite of lot of practice, in spite of lots of stress, strains that you are undergoing while practicing and rehearsing for these cultural programs. I would also like Mr. R.S. Singh for organizing, not only organizing, supporting the organizer in making candlelight Martyr Days commemoration very, very successfully yesterday. And the most of the credit from my side, and also on the behalf of the institute, would go to Dr. Seema R. and Miss Amandeep Kaur, who constantly stood by me in spite of having their family issues and health issues. Still they supported me in a very, very big way. Give them a big round of applause. And I would like to thank the busiest DCGC students who gave time until 11:30 last night. They were practicing the last rehearsals, and they made their way here and could see the culture of the NERIE and how glorious we are, and I am very happy about that on my personal behalf and also on the behalf of the institution. I would like to thank Kumari Tashi Debra and Chiranjeevi, Debajit Mondal, who have been harassed by me day and night thoroughly, that they should understand teachers are not born, teachers are made. Leaders are not born, leaders are made. And leaders are made by the teachers, and you are going to be the teachers of this nation. And I will never be forgiven if I forget to thank each and every one of my beard friends who are more affable, most amazing, awesome, awestruck kind of energies that they can present. That what is Northeast in India? They are not only the pride of Northeast of India, they are also pride of the nation. And I thank all the studio personnel, Farid, for ICT, Kriman from studios, and Mainuddin from the studio, and also I would like to thank all the MTS who cooperated effectively and efficiently, and I thank all the administrative staff for getting this work done, program done in a lightning speed. Thank you, one and all. Lastly, I would say, Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Jana Swasti. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे